Namaste everyone. Pranam, so warm welcome. There was a small technical issue, so there was a delay. So let us start with Guru Vandanam. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो ध्यानम् सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनाम् माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणाङ्करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीम् सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्ड मण्डला. Let's go to the verse number 121 for a quick revision of the verses that we learned in the last class. Let me just reshare my screen. दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः देवेशी दण्डनीतिस्था
दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रहा आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रहा क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता So let's start with the new verse. Let's read out the verse first. Vishwagarbha. We have Sh and Va in Vishwa. Vishwa. Garbha. Bha is Mahaprana. Swarna Garbha. Swarna Garbha. Again, Bha is Mahaprana. If you chant this entire word together. Swarna Garbha Varada. Vagadhishwari. Vagadhishwari, dha is Mahaprana. So, Swarnagarbha, Avarada, and Vagadhishwari. When we chant together, this will be Vishwagarbha, Swarnagarbha, Varada, Vagadhishwari. Dhyanagamya, dha is Mahaprana, the first letter in second line. Dhyanagamya, Aparichedya. In Chedya, we have both Alpaprana cha and Mahaprana cha. So, Aparichedya, Alpaprana the and ya in dya. So, if we chant this second line, first, that is the first part, third padam. Dhyanagamya Parichedya. Jnanada, Jnana Vigraha. Vigraha. You can repeat twice after me. विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा
विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधि क्षम्यतां go ahead विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी 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 विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या 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 परिच्छेद्या ध्यानगम्या परिच्छेद्य ध्यानगम्या परिच्छेद्य ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा ज्ञानदा ज्ञानविग्रह ज्ञानदा ज्ञानविग्रह ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा ध्यानगम्या परिच्छेद्य ज्ञानदा ज्ञानविग्रह ध्यानगम्या परिच्छेद्य ज्ञानदा ज्ञानविग्रह So, just to reiterate, in the first line, Vishwagarbha, Swarnagarbha, Avarada, and Vagadhishwari is the split of names. However, when we chant together, we chant the second word Swarnagarbha, Varada together. Similarly, in the second line, Dhyanagamya, Aparichedya is the split if we consider the names separately. Those are two different names. However, when we chant, we are going to chant this as Dhyanagamya Parichedya. So let me chant this. You can repeat after me. Vishwagarbha Swarnagarbha Varada Vagadhishwari Dhyanagambya Parichedya Jnanada Jnanavigraha. विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्य ज्ञानदा ज्ञानविग्रह विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्य ज्ञानदा ज्ञानविग्रह Let's move to the next verse. Sarva Vedanta Samvedya, Samvedya or Samvedya, Sarva Vedanta Samvedya, Satyananda Swarupini, Lopa Mudrachita, Leela Klipta Brahmanda Mandala. Leela Klipta Brahmanda Mandala to be chanted together. Sarva Vedanta Samvedya, then chant it as Sarva Vedanta Samvedya, Satyananda Swarupini, Lopa Mudrachita, Leela Klipta Brahmanda Mandala. Sarva Vedanta Samvedya, सर्ववेदान्तसंवेद्य सर्ववेदान्तसंवेद्य Satyananda Swarupini.
सत्यानन्दस्वरूपिणी सत्यानन्दस्वरूपिणी सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता 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 लीलाक्लृप्तब्रह्माण्डमण्डला 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 लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लृप्तब्रह्माण्डमण्डला लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लृप्तब्रह्माण्डमण्डला लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लृप्तब्रह्माण्डमण्डला सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लृप्तब्रह्माण्डमण्डला सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लृप्तब्रह्माण्डमण्डला सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लृप्तब्रह्माण्डमण्डला Let's move to the next verse. Adrishya, this is Adrishya, Drishyarahita, Vignatri, Vedyavarjita. Adrishya, Drishyarahita, Vignatri, Vedyavarjita. Yogini, Yogada, Yogya, Yogananda, Yugandhara. Dha is Mahaprana. अदृश्या दृश्यरहिता अदृश्या दृश्यरहिता अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगिनी योगदा योग्या योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा योगानन्दा युगन्धरा योगानन्दा
योगानन्दायुगन्धरा योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा योगिनी योगदा योग्या योगानन्दायुगन्धरा योगिनी योगदा योग्या योगानन्दायुगन्धरा अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा The next one. इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी दीर्घ इच्छा. In this we have alpa prana cha and mahaprana cha. इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी. We have to chant this line together. It's funny. इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा. ध is mahaprana. सुप्रतिष्ठा श and ठ. सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी. Dha is mahaprana in dharini. Sadasadrupadharini. Ichha shakti. इच्छाशक्ति इच्छाशक्ति Jnana shakti. ज्ञानशक्ति ज्ञानशक्ति Kriya shakti swarupini. क्रियाशक्ति स्वरूपिणी क्रियाशक्ति स्वरूपिणी Ichha shakti jnana shakti. इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति Kriya shakti swarupini. क्रियाशक्ति स्वरूपिणी क्रियाशक्ति स्वरूपिणी इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी. इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा. सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी. सदसद्रूपधारिणी सदसद्रूपधारिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी. सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा
सदसद्रूपधारिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी Let's go to the next verse. Ashtamurti Raja Jaitri. In Ashta, we have Sha and Alpa Prana Ta. Ashtamurtihi Aja Jaitri. If we split, if we chant together, when we do the Parayana, we chant this together only. Ashtamurti Raja Jaitri. Lokayatra Vidhayini. Dha is Mahaprana. Ekakini Bhuma Bha is Mahaprana, and both Bhu and Ru in this Bhuma Rupa, there is Dirghaksharas. Nirdvaita Dvaita Varjita Ashtamurti Raja Jaitri. अष्टमूर्तिरजा जैत्री अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी लोकयात्रा विधायिनी लोकयात्रा विधायिनी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा एकाकिनी भूमरूपा एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता निर्द्वैता द्वैतवर्जिता निर्द्वैता द्वैतवर्जिता एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता
अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता Uttamam. Let's go to next verse. Annada, we have na anna, annada, vasudha. Please note there is an alpa prana da here, vasudha, vriddha. So we have in vriddha both alpa prana da and mahaprana dha. ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानंदा बलिप्रिया बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानंदा बलिप्रिया अन्नदा वसुधा वृद्धा अन्नदा वसुधा अन्नदा वसुधा वृद्धा अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी 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 अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया भाषारूपा Bha is Mahaprana. Then we have Sha. Ru is a Dirghakshara. Bhasha Rupa. In the first word, everything, all the letters are ending with a Dirgha only. Brihat Sena. Brihat Sena. Bhava Bhava Vivarjita. Both the bhas are Mahapranaksharas. Bhava Bhava Vivarjita. Sukharadhya Khandha. Shubhakari Shobhana Shubha Bha
Shobhana bha. Sulabha gatihi. Again we have bha mahaprana. Bhasharupa Brihatsena Bhava Bhava Vivarjita Sukharadhya Shubhakari Shobhana Sulabhagatihi. Bhasharupa Brihatsena भाषारूपा बृहत्सेना भाषारूपा बृहत्सेना Bhava Bhava Vivarjita भावा भावविवर्जिता भावा भावविवर्जिता भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी सुखाराध्या शुभकरी सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः शोभना सुलभा गतिः शोभना सुलभा गतिः सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः Uttamam. Let's look at the next verse. Rajarajeshwari Rajyadayini Rajyavallabha. In Rajyavallabha, you can notice la and la. Rajyavallabha. Bha is Mahapranakshara. Rajat Kripa Rajapitha Niveshita Nijashrita. Pitha tha is Mahaprana. Rajarajeshwari Rajyadayini Rajyavallabha Rajat Kripa Rajapitha Niveshita Nijashrita. Rajarajeshwari राजराजेश्वरी राजराजेश्वरी Rajyadayini राज्यदायिनी राज्यदायिनी Rajyavallabha राज्यवल्लभा राज्यवल्लभा Rajarajeshwari Rajyadayini Rajyavallabha
राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठ राजत्कृपा राजपीठ राजत्कृपा राजपीठ निवेशितनिजाश्रिता 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 So while I took a pause or a break after Rajapita, when we actually do the Parayana, we are not supposed to take a pause in the word Rajapita Niveshita Nijashrita. Rajat Krupa, and then we have to chant the last part together. That is Rajapita Niveshita Nijashrita. Rajat Krupa Rajapita Niveshita Nijashrita. राजत्कृपा राजपीठ निवेशितनिजाश्रिता राजत्कृपा राजपीठ निवेशितनिजाश्रिता राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठ निवेशितनिजाश्रिता राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठ निवेशितनिजाश्रिता So we will quickly chant once. I will chant once from 127, which we learned today. The meanings we will take up in the next class. विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लृप्तब्रह्माण्डमण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्रीवेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्ति क्रियाशक्तिस्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया
भाषारूपा बृहत् सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता. So we'll stop here. Let us do the Mangalam. Let us do the meanings and practice in the next class. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तु ते. Pranams to everyone. Punarmilamah.